Assalamu alaikum students. Today we are starting 9709 May June 2019 summer 2019 paper 1-2. The starting time is 11 and let's see when we'll end this paper. Now, question number 1. What we have in this question number 1? Question number 1 is the question of binomial. Find the coefficient of x in the expansion of the given bracket. So now we have to use the formula TR plus 1 equals to NCR A power n minus R B power R. So now TR plus 1 equals to NCR A power n minus R and B power R. Now, what we have to do in the next step, हमें तमाम R's को एक साथ करना है. So first, simplify the powers. 5CR 2 power 5 minus R divided by x power 5 minus R. Here it is minus 3 power R and x power R. Now combine all x. So it will be 5CR 2 power 5 minus R minus 3 power R and x power R minus 5 plus R. जब ये डिनोमिनेटर वाला x न्यूमरेटर में आएगा तो पावर के साइन चेंज हो जाएंगे. So it will be 5CR 2 power 5 minus R minus 3 power R x power 2R minus 5 x power 2R minus 5. Now, after that, we need 1 in the power of x. So, यहाँ पर हम कह सकते हैं 2R minus 5 equals to 1. So, 2R equals to 6. And what is the value of R? The value of R is 3. Therefore, this equation will be T 3 plus 1. जहाँ R है उसको रिप्लेस कर देंगे हम 3 से. 5C3 2 power 5 minus 3 minus 3 power 3 and x power 1. So therefore, according to this, by using our calculators, the answer will be minus 1080x, and we need the coefficient. So the coefficient is minus 1080. This is the answer of the first question of binomial, in which we have to find the coefficient of x in the given bracket. After that, what we have in question number 2. Question number 2 is 2 points A and B have coordinates this and this. The perpendicular bisector of AB intersect the Y. Okay, first we have to find the equation of perpendicular bisector. First, we have to find the equation of perpendicular bisector. Let's say this is A and this is B. The coordinates of A are 1 and 3. The coordinates of B are 9 and minus 1. We have to find the equation of perpendicular bisector. So first we have to calculate the midpoint of AB. And how can we calculate the midpoint of AB? It will be x1 plus x2 by 2. So 1 plus 9 divided by 2 is 5. And 3 minus 1 divided by 2 is 1. So the coordinates of midpoint are 5 and 1. Midpoint के coordinates आ गए हमारे पास 5 and 1. And after that, the gradient of AB. The gradient of AB is
y2 minus y1 over x2 minus x1. So it will be minus 4 over 8, and the gradient is minus 1 over 2. If this is the gradient of AB, then the gradient of perpendicular is negative reciprocal, which is 2. Therefore, by using the formula y minus y1 equals to m x minus x1, x1 is 5, y minus 1 equals to 2x minus 10, and y equals to 2x minus 9 is the equation of perpendicular bisector. आपसे कहा गया the perpendicular bisector of AB intersect the y-axis at C, find the coordinate of C. If the perpendicular bisector intersect the y-axis, तो y-axis को जब कोई भी चीज intersect करेगी तो उसमें x 0 होगा और y की कोई वैल्यू होगी. So in the equation of perpendicular bisector, y equals to 2x minus 9. If x is 0, then the value of y is minus 9. Therefore, C के जो coordinates आए हैं हमारे पास वो कितने आ गए 0, minus 9. These are the coordinates for C, where the perpendicular bisector intersects y axis. This is your question number 2 about coordinate geometry. And after that, question number 3 is about the differentiation. What we have in this, in the question, a curve is such that dy over dx is given. The point P29 lies on the curve. In the first part, a point moves on the curve in such a way that the x coordinate is decreasing at a constant rate. Rate of x coordinate is dx over dt is 0.05, and it is a decreasing rate, so we have to put a negative sign. Find the rate of change of y. dy over dt हमें calculate करना है. How can we calculate dy over dt? It will be like dy over 1 into 1 over dt. हमने chain rule से break कर दिया. And the third thing we have in the question is dx, तो वो तीसरी चीज यहाँ पर आ जाएगी cross में. Now, we need the value of dy over dx and the value of dx over dt. Dx over dt is given minus 0.05. But how can we calculate dy over dx? How can we calculate dy over dx? dy over dx आपको given दिया गया है. dy over dx में अगर x की जगह पर 2 रख दिया जाए, because the value of x is 2 and we need at point P. So it will be 2 cube minus 4 upon 2 square. So it will be 8 minus 1. It is 7. So here it is 7. So the final answer is minus 0.35. This is the final answer, the rate of change of y. The rate of change of y. After that, find the equation of the curve. And if we have to find the equation of the curve, so it means we have to integrate. Equation of the curve will be integral of the given dy over dx, given gradient. It will be x cube minus 4 x power minus 2. Point from where the curve crosses is 2, 9. Now, how can we calculate the equation of curve? We have to integrate this. So, integrate करते हैं जनाब. x cube का इंटीग्रल क्या हो गया? x पावर 4/4 minus 4 ऐसे ही रहा. x पावर minus 2 का इंटीग्रल क्या हो गया? x पावर -1/-1. So it will be 1/4 x power 4 plus 4/x plus c. This is the equation of curve with c. And how to calculate c? Just replace x and y by 2 and 9. So y is 9, x is 2, here it is 2 power 4 plus 4/2 plus c. By this, the value of c will be minus 4. Therefore, the equation of the curve is y equals to 1/4. Therefore, the equation of the curve will be y equals to 1/4. अच्छा, c की वैल्यू मैं जरा दोबारा से कैलकुलेट कर लूं. How can what is the value of c? Here it is 9.
equals to 2 power 4 is 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. 16 divided by 4 is 4, plus 4 upon 2 is 2, plus C. So C equals to 9 minus 6. 9 minus 6, the value of C is 3. The value of C is 3, sorry. Therefore, the equation of the curve is y equals to 1 upon 4 x power 4 plus 4 upon x plus 3. This is the equation of the curve which we have to calculate. Now, after this question, after the question of differentiation and integration, the next question is the question of trigonometry. Angle x is such that sin x equals to a plus b and cos x equals to a minus b. आपसे कहा गया show that a square plus b square has a constant value. करते हैं जनाब. a square sin और cos ऊपर नजर आ रहे हैं, तो और इधर a square plus b square हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर मैं एक आइडेंटिटी यूज करूं sin square x plus cos square x equals to 1. So what is sin x? The value of sin x is a plus b. The value of cos x is a minus b equals to 1. Expand the bracket, a square plus 2ab plus b square. Expand the bracket, a square minus 2ab plus b square equals to 1. 2ab and 2ab cancel out. A square, 2a square. B square, 2b square equals to 1. 2 common, therefore a square plus b square equals to 1 upon 2, and which we have to prove that the value of a squared plus b squared is a constant value. And after that, what we have in the next part, in case where tan x equals to 2, express a in terms of b. Tan x equals to 2 means sin x over cos x equals to 2. And what is sin x given in the question? It is a plus b. And what is cos x given in the question? A minus b equals to 2. So a plus b equals to 2a minus 2b by cross multiplication. So 2a minus a is a, and b plus 2b is 3b. We have to find express a in terms of b. So a equals to 3b. A आ गया जनाब in terms of b. This we have to find in question number 4, second part. Now, after that, next question is a question of circular measures. क्या कहा गया जनाब? The diagram shows a semicircle with diameter AB, center O, radius R. The point C lies on the circumference. Angle AOC is theta. The perimeter of the sector BOC. Perimeter of the sector BOC is twice the perimeter of the sector AOC. Now, what we need in the perimeter of BOC? We need BC, a curve, plus we need OB, a straight line. We need OC, a straight line, equals to twice what we need in the perimeter of AOC, AC, a curve, plus OC, a straight line, plus OA, a straight line. Now, how to calculate BC? How to calculate BC? Here is the angle, and the angle is pi minus theta, 180 minus theta. This is an arc length with radius r. So arc length, how to calculate arc length? R theta. But here the theta is pi minus theta. So this is the arc length. This is the arc length BC. And now, how to calculate the arc length AC? S equals to r theta. Here theta is theta. So this is the arc length AC. So now, at the place of BC, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? R pi minus theta plus OB is R plus OC is R equals to twice. At the place of AC, we are replacing AC by R theta plus OC is R
plus OA is R. Sorry, OA is R. Because these are the radii of the same circle. Now, after that, R common from this side, so it will be pi minus theta plus 1 equals to R common from this side, so it will be theta plus 1 plus 1. R से R cancel कर दिया common लेने के बाद. So it will be, we have to find the value of theta. So it will be pi minus theta plus 2 equals to 2 theta plus 2 into 2 is 4. We have to make theta be the subject. So अगर थीटा को राइट साइड पर लेकर आते हैं तो 2 theta plus theta is 3 theta equals to pi minus equals to pi and 2 minus 4 is minus 2. So the value of theta is pi minus 2 divided by 3. And according to your calculator, the answer will be 0.381. We need to calculate the value of theta up to 3 decimal places, up to 2 significant figure. So we can also write it like 0.38 up to 2 significant figures, right? Now, मजीद आगे चल रहे हैं जनाब. Question number 6, again the question of trigonometry, I think. Yes, the equation of a curve is, the equation of the curve is given. The equation of the curve is given, and what we have to find, in this equation, we have to find say the smallest and the largest values of y for both the curve and the line. कर्व की इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 3 cos 2x. लाइन की इक्वेशन दी गई, मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूं, सो 2y इक्वल्स टू 5 minus 3x over 5 and y equals to 5 over 2 minus 3x over 2 pi. We need to calculate the smallest and the largest values of y for both the curve and the line from 0 to 2 pi. Now, it is a cos curve, and we know that for the cos curve, what is the main axis in this? Main axis is 0 because there is no nothing after 3 cos 2x. अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ कोई चीज आ जाए तो वो मेन एक्सिस होता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं. तो 0 इज द मेन एक्सिस. दिस इज द मेन एक्सिस. मेन एक्सिस में हमें ऐड करवाना पड़ता है एम्पलीट्यूड को. मेन एक्सिस प्लस 3 is 3. Main axis minus 3 is minus 3. So the minimum value is minus 3, and the maximum value of the curve is 3. After that, for a line, अब आप देखिए कर्व तो हमारा, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या करना होगा? स्ट्रेट लाइन के लिए सिंपल, जो x की आपको वैल्यूज दी गई 0 से लेकर 2 पाए, तो पहले आप x की जगह रख दीजिए 0. तो when x is 0, y when x is 0, the answer is 5/2. और एक बार x की जगह रख दीजिए 2 पाई. So y when x is 2 pi, the answer is, जब 2 पाई रखा जाएगा, the answer will be -1/2. Therefore, in this condition, minimum value is -1/2 and the maximum value is 5/2 according to the line. लाइन में तो हमने सिर्फ जो आपको डोमेन गिवन था, मिनिमम मैक्सिमम डोमेन रखा, आपके पास मिनिमम मैक्सिमम लाइन की वैल्यूज आ गई. लेकिन कर्व में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कर्व हर जगह चेंज हो रहा होता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है, तो इस वजह से कर्व को अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हमने कैलकुलेट कर लिया. आफ्टर दैट स्केच ऑन द सेम डायग्राम द ग्राफ ऑफ द कर्व एंड द लाइन. ओके, अब स्केच करते हैं जनाब. हाउ टू स्केच द कर्व. Now, from 0 to 2 pi, so just write pi by 2, 90 degrees, pi 180 degrees, 3 pi by 2, 270, and 2 pi
360 degrees and 2 pi 360 degrees. Now यहां पर क्या दिया हुआ है cos 2x, तो हर पोर्शन दो पोर्शंस में ब्रेक हो जाएगा. After that the main axis is 0, so amplitude is 3 above and 3 below. Now we have to sketch the cos curve. Cos start होता है जनाब मैक्सिमम से. मैक्सिमम, एक्सेस, मिनिमम, एक्सेस, मैक्सिमम, एक्सेस, minimum, excess, maximum. This is the cos curve. Sketch करते हैं cos curve को. Here and here. This one and this one. ठीक हो गया था. ये cos curve बन गया. अब लाइन हमें sketch करनी है यहाँ पर. What was the minimum value of the line? When 0, the minimum value is minus half. When 0, the minimum value is minus half. Minus half is somewhere here. Minus half is somewhere here. And when 2 pi, the value is 5 upon 2, somewhere here, 2.5. So just draw a straight line. Draw a straight line. This is the straight line. This is the straight line. Up to 2 pi. And here up to 0. Now, ये आपने straight line और curve को sketch कर दिया. Now, after that, next part, state the number of solution of the equation 6 cos 2x equals to 5 minus 3x over pi. ये equation basically जो ऊपर हमारी ये जो दो equations दी गई हैं, इन्हीं को अगर हम कंबाइन करते हैं, y को इक्वेट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन जनरेट हो रही है. तो बस हमें ये बताना है कितनी जगह पर कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं. कितनी जगह पर कर रहे हैं? 1 2 3 4. 4 जगह पर कर्व और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये हमने मार्क कर दिया इधर. This is of 1 mark only. Just you have to write 4. After that, question number 7. Question number 7 is the question of functions. What is in this question number 7? कहा गया जनाब, in the first part, obtain f inverse. How to calculate f inverse? y से function को compare किया जाएगा, x को बनाया जाएगा subject, so it will be y plus 2 divided by 3. जैसे ही x subject बनेगा, हम इसको कह सकेंगे this is f inverse of x. So it will be x plus 2 over 3. And after that, for g, same, y से equate किया जाएगा g function, 2x plus 3 over x minus 1, cross multiplication, xy minus y equals to 2x plus 3. Now, xy minus 2x equals to y plus 3, x common, so it will be y plus 3 divided by y minus 2. This is g inverse of x, which is x plus 3 over x minus 2. Stating the value of x, ये तो inverse निकल कर आ गए. After that, stating the value of x for which g inverse is not defined. जब भी function fraction में हो और x की वैल्यू निकालना हो जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो डिनोमिनेटर को आप कर दें इक्वेट 0 से. x minus 2 equal to 0, so the value of x equals to 2 means x can't be equals to 2. अगर x 2 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा. So this is the answer for stating the value of x for which g inverse is not defined. After that, solve the equation. fgx equals to 7 upon 3. So the function fx is 3x minus 2. And the function gx is 2x plus 3 divided by x minus 1. First, we have to make a composite function. Then इसको equate करना होगा 7 upon 3 से.
फंक्शन f में g रखना है हमें. So 3. And what is g? Here it is 2x plus 3 divided by x minus 1 minus 2 equals to 7 upon 3. Now 3 को multiply कीजिए. 6x plus 3 divided by x minus 1 equals to 7 upon 3 plus 2. So 6x plus 3 divided by x minus 1. By taking LCM, it will be 3 to the 6, 6 plus 7, 13 over 3. Now, cross multiplication of denominator x minus 1. So it will be 6x plus 3. Wait. Cross multiplication on both the sides. 3 cross multiply होगा numerator के साथ. 18x plus 9 equals to 13x minus 13. 18x minus 13 will be 18x minus 13 will be 5x equals to minus 13 minus 9 will be minus 22, and the value of x is minus 22 over 5, and the value of x is minus 22 over 5. Okay, students, there is a correction in this question, in this step. In this step, 3 2s are 6, x and 3 3s are 9. We have to write 9 here. We have to write 9 here. So यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? Here it is also 9. Now, after that, we are again solving this for the value of x. So this one will be 3 cross multiply 18x plus 27 equals to 13x minus 13. 18x minus 13 is 5x, and 27 plus 13 is minus 40. Therefore, the value of x is minus 8. This is the correct answer for x. This is the correct answer for x. Now, after that, what is next? Next question is the question of vectors, which is not in our syllabus now. So we are moving toward the next question number 9. And what we have in this question number 9? Question number 9 is the curve C1 has equation this, and the curve C2 has equation this, where K is a constant. The tangent to C1 at the point x equals to 3 is also a tangent to C2 at the point P. Okay. Find the value of K. ठीक हो गया. हम देखें C1 कर्व के ऊपर टेंजेंट कैलकुलेट कर रहे हैं. टेंजेंट at C1. C1 curve is y equals to x squared minus 4x minus 7 . अच्छा स्टूडेंट जरा आप okay students, now after that here tangent at C1. First here is the equation of the curve. Differentiate this to get the gradient of tangent. dy over dx is 2x minus 4 at x equals to 3. So the gradient of tangent at x equals to 3 will be 2 multiplied by 3 minus 4, and here it will be 3 2s are 6, 6 minus 4 is 2. This is the gradient of tangent. This is the gradient of tangent, and the coordinate of tangent will be when x is 3. What is the value of y? Just replace x in this equation. So here it is 3 squared, 9, 9 minus 12 plus 7 will give us 4.
This is the coordinate. So the equation of tangent will be y minus y1 equals to m x minus x1. So y minus 4 equals to 2x minus 6 and y equals to 2x minus 2. This is the equation of tangent. अब देखिएगा क्या कहा गया, the tangent to C1 and the point x equals to 3 is also the tangent to C2. C2 के ऊपर भी ये tangent है. And what is the equation of this tangent? Y equals to 2x minus 2. And what is the equation of C2? Y squared equals to 4x plus k. 4x plus k. And now, as the line is tangent to the curve, तो इस पर हम कह सकते हैं कि discriminant is equals to 0. Discriminant is equal to 0. और discriminant equal to 0 करने के लिए we have to make equation in x. तो दोनों को जरा simultaneously solve करते हैं. Y की वैल्यू 2x minus 2 equation of the curve में रखते हैं. So it will be 2x minus 2 whole square equals to 4x plus k, and this one will be a square minus 2ab plus b square minus 4x minus k equals to 0. So now b square minus 4ac. अच्छा, एक और स्टेप कर लेते हैं जरा. And what is we have to do in this step? It will be 4x square minus 8x minus 4x is minus 12x plus 4 minus k equals to 0. Now b square minus 4ac equals to 0. What is the value of b? Minus 12 square minus 4. What is the value of a? 4. What is the value of c? 4 minus k equals to 0. Now, after that, 12 square is 144. Minus 4 fours are 16. And 16 fours are 64. Now, 4 fours are 16. And 16 into k is plus 16k equals to 0. According to this, the value of k is minus 5. According to this, the value of k is minus 5. And after that, find the value of k and the coordinates of p. हमें इस p के coordinates भी calculate करना है. इस p के हमें coordinates भी calculate करना है. तो k की वैल्यू अगर -5 है, k की वैल्यू अगर -5 है, हम रखते हैं इस इक्वेशन में, जो कि कंबाइन इक्वेशन बनी हुई है किसकी? कर्व और लाइन की. सो इट विल बी 4x square minus 12x. The value of k is -5, so it will be 4 plus 5 is plus 9 equals to 0. According to your calculator, the value of x is 3/2. और अगर 3/2 वैल्यू को हम इक्वेशन ऑफ लाइन में या इक्वेशन ऑफ कर्व में रखते हैं, 3/2 को अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन में रखते हैं, y equals to 2, 3/2 minus 2, 2 and 2 cancel out, 3 minus 2 is 1. तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 1. Therefore, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स p के आ गए हमारे पास 3/2, 1. These are the coordinates of p. Hopefully it is clear. A lengthy question, but the question is of 8 marks, but not difficult. And after that, what is next? The next is the question of series. In the A part, in an arithmetic progression, the sum of the first 10 terms is equal to the sum of the next 5 terms. Show that the common difference is 1/3a. Okay. क्या कहा गया? Sum of the first 10 terms is equal to the sum of the next 5 terms. क्या मतलब? अगली 5 terms. मतलब 11 से लेकर 15 तक. तो क्या हम लिख सकते हैं? S15 minus S10. अगर हम ये कर दें, S15 में से S10 निकाल दें, तो 5 टर्म्स रिमेनिंग रह जाएंगी. Sum of the first 10 terms equals to the next 5 terms. So according to this rule, S10 को अगर लेफ्ट साइड पर लेकर आ जाएं, तो क्या हो जाएगा? 2S10 equals to S15. And now by using the formula of sum for arithmetic progression, n by 2, 2a plus n minus 1, common difference is d. Here
the left hand side and the right hand side is n by 2, 2a plus n minus 1, and the common difference is d. Now, 2 and 2 cancel out. 10 multiplied by 2a is 20a. Plus 10 minus 9 is 9. 10 minus 1 is 9. 9 multiplied by 10 is 90d equals to. Here it is 15 over 2. In the bracket, 2a plus 14d. Now, 20a plus 90d equals to 2 common lay. So 15 in the bracket, we have a plus 7d. Now, 20a plus 90d equals to 15a plus 15 multiplied by 7. 15 multiplied by 7. It is 105. 105d. After that, we have to find the common difference. So 90d को अगर राइट साइड पर लेकर जाएं तो 105 minus 90 is 15d equals to 20 minus here it is 5a. So d equals to 5a over 15, which is equals to 1 upon 3a, which we have to prove. After that, in the second part, given that the 10th term is 36 more than the 4th term, 10th term is 36 more than, 36 ज्यादा है, 36 times नहीं है, 36 more than the 4th term. So now, 10th term, it's an arithmetic progression given in the question, so it will be a plus n minus 1 into d equals to 36 plus a plus n minus 1, sorry, 4 minus 1, क्योंकि 4th term है, into d. Here it is, a and a cancel out. 10 minus 1 is 9, d equals to 36 plus 3d. Now 3d left side पर जाएगा तो 6d equals to 36. And what is the value of d? The value of d is 36 divided by 6 is 6. We have to find the value of a. So in the previous part, we calculated that d is equals to 1 upon 3a. d equals to 1 upon 3a. So if d is 6, so the value of a will be 18. The value of a will be 18. We have calculated this a. हमने previous part का आंसर क्यों यूज कर लिया? क्योंकि कंडीशन, जनरल कंडीशन थी इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म. यहां से ये जनरल कंडीशन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पर एप्लीकेबल हैं. इस बार से हमने पार्ट 1 की हेल्प लेते हुए पार्ट 2 सॉल्व कर लिया. एंड आफ्टर दैट इन द बी पार्ट, द सम टू इंफिनिटी ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन is 9 times the sum of the first 4 terms. Now, we have to calculate, given that the first term is 12, find the value of the 5th term. ठीक हो गया. Calculate करते हैं. S infinity is a over 1 minus r equals to 9 times. सम का फॉर्मूला क्या है? a r की पावर n. n कितना है? 4 minus 1 over r minus 1. Close. A and a cancel out. The both a are same. Here it is 1 over 1 minus r. अगर मैं डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? r पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1 r माइनस 1. माइनस अगर कॉमन ले लें r माइनस 1. क्यों कॉमन लिया? ताकि r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो जाए. सो नाउ इट विल बी 1 ओवर -9. -9 को
इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया गया, इक्वल टू आर पावर 4 माइनस 1. सो आर पावर 4 इक्वल टू 1 minus 1 over 9. So r power 4 equals to 8 over 9. And what is the value of r? Therefore, what is the value of r? We have power 4 here. तो क्या हो जाएगा? फोर्थ रूट कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे. सो द फोर्थ रूट मीन्स r equals to 8 over 9 power 1 upon 4. And according to this, the result is 10.7. This is the value of r. Hopefully it is clear. Again, a simple question of geometric progression. Now, after that, what is next? The next question is question of integration and differentiation. आपसे कहा गया, अभी तो हम डायग्राम देख ही नहीं रहे हैं. In the first part, आपसे कहा गया find the expression of dy over dx. The equation of the curve is y equals to 4x plus 1 का अंडर रूट प्लस 9 न्यूमरेटर में लेकर आ जाइए 4x plus 1 की पावर माइनस हाफ. डिफरेंशिएट करते हैं तो dy over dx क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं? अपॉन ट्वाइस द क्वेश्चन 4x plus 1 और अंडर द रूट जो भी चीज है इसका डेरिवेटिव ऊपर. हियर इट इज 4. So the answer will be 2 upon under root 4x plus 1. And here it is plus 9 4x plus 1 की पावर माइनस हाफ नीचे आएगा, माइनस हाफ नीचे आएगा और माइनस हाफ नीचे आया और 4x plus 1 की पावर माइनस हाफ माइनस 1 इज माइनस 3 अपॉन 2. साथ में बेस का डेरिवेटिव विच इज 4. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो इट विल बी 2 अपॉन अंडर रूट 4x plus 1. हियर इट इज 2 2s are 4 and 2 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा with minus sign it will be 9 2s are 18 upon 4x plus 1 power 3 upon 2. This is the derivative of the curve, and after that we also have to integrate the curve. Again, curve की equation में लिख रहा हूँ under root 4x plus 1 plus 9 4x plus 1 power minus half. इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों. So after the integration it will be 4x plus 1 power half plus 1 3 upon 2 divided by 3 upon 2 और साथ में बेस का डेरिवेटिव 4 plus 9 4x plus 1 minus half plus 1 is half divided by half, साथ में बेस का डेरिवेटिव 4. So it will be after cancellation 1 upon 6 times 4x plus 1 power 3 upon 2, and here it is 9 upon 2 times 4x plus 1 power half plus c. This is the integral. This is the integral. Hopefully there's no confusion. Hopefully there's no confusion in this. And after this, what is next? अच्छा, ये तो पॉजिटिव है ना? जी हाँ, पॉजिटिव रहेगा ये. What is next? The next is find the coordinate of m. What is m? Now, in the question, m is the minimum point. जब भी मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं हम डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं. तो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को मैं कॉपी कर रहा हूं. डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को मैं कॉपी कर रहा हूं जनाब, और इसको हम इक्वेट कर रहे हैं किससे? इसको हम इक्वेट कर रहे हैं किससे? जीरो से. क्योंकि डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को जब जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमारे पास स्टेशनरी कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. सुना, अब आप देखिए, हियर इट इज 2 over 4x plus 1 power half equals to 18 over 4x plus 1
पावर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x प्लस 1 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 होल पावर हाफ equals to 18/2. Now, basis same, so 4x plus 1 whole power 3/2 minus half, and 3/2 minus half will be 3/2 minus 1/2 will be 1. So it is 4x plus 1 equals to 18/2 is 9. So 4x equals to 9 minus 1 8, and the value of x is 2. x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कर्व की इक्वेशन में रखना होगा x को। कर्व की इक्वेशन में x को रखना होगा। कर्व की इक्वेशन में x को रखते हैं तो y इक्वल्स टू अंडर रूट x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? x की वैल्यू आई थी हमारे पास जनाब, द वैल्यू ऑफ x इज 2। इसको रखते हैं क्वेश्चन में, कर्व की इक्वेशन में x की जगह पर। सो इट विल बी 4 टू द 8, 8 प्लस 1 इज 9 प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 9। So it is 3 plus 9/3, and here it is 3 3s are 9, and 3 and 3 is 6। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6 आ गई। इसको हम कॉपी कर देते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर हम कॉपी कर देते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी नाउ। हियर इज द वैल्यू ऑफ y। देयरफॉर m के जो कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास वो क्या आ गए? 2,6। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट, the shaded region is bounded by the curve y-axis and the line. Okay, find area of the shaded region. We have to calculate the area of the shaded region. Area of the shaded region के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि लिमिट्स क्या है हमारी। लिमिट्स हैं 0 से लेकर m की वैल्यू जो आई है हमारे पास x एक्सिस पर, इट इज 2। तो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करना होगा। किसको? जो हमने कर्व इंटीग्रेट किया हुआ है इस पर लिमिट्स लगा देंगे। इस पे अब हम लिमिट्स लगा देंगे। Here it is, here it is, here it is 3/2, and here it is 1/2। नाउ एरिया कैलकुलेट करेंगे तो इस पर लिमिट्स लगा देंगे। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक। और सी को अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिटिंग इंटीग्रल में सी नहीं होगा। लिमिट्स अप्लाई करते हैं जनाब। अपर लिमिट पहले 2 रखेंगे हर जगह पर, 1/6। 4 2 8, 8 प्लस 1 9 पावर 3/2, 9/2। Here it is 4 to the 8, 8 plus 1, 9, 9 power half. This is upper limit minus lower limit. And the lower limit will be 0 रखा जाएगा x की जगह पर. So it will be 1/6 plus 9/2. Directly आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको. It's not necessary to show the step. So it will be this will be 27/6 plus this will be 27/2 minus 1/6 and minus 9/2. So the final answer will be 40/3. This is the final result. लेकिन अब आप देखिए ये जो 40/3 आया है ये कंप्लीट एरिया आ गया। बट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस पोर्शन। इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। m के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले थे हमने? 2, m के जो कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट किए थे वो कितने थे? 2,1। तो इट मींस यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो स्ट्रेट लाइन क्या है? y इक्वल्स टू 1 की स्ट्रेट लाइन। किसकी है जनाब? y इक्वल्स टू 1 की। तो अब y इक्वल्स टू 1 के अंडर जितना एरिया आ रहा है हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो a2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। लेट्स से a2 इंटीग्रेट करना है y इक्वल्स टू 1 विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का इंटीग्रल क्या हुआ? x
लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 2 तक. So here it is 2 minus 0 upper limit minus lower limit. Here it is 2. तो A2 कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया. मीन्स जो ये एक्स्ट्रा एरिया रेड कलर का जो बन रहा है, एरिया अंडर द लाइन, ये कितना है हमारे पास? ये 2 का एरिया है. इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा हमारे इस एरिया में से. किस एरिया में से? जो हमने एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया है. दिस इज A2. Therefore, the final result will be, this is let's say A1. Therefore, the final result will be A1 minus A2. So 40 over 3 minus 2. So the answer will be, 3 to the 6. 40 minus 6 is 34 over 3. This is the final result of area of the shaded portion. Hopefully it is clear. पहले हमने area under the curve calculate किया और उसके बाद फिर area under the line, दोनों को subtract किया तो final area of the shaded portion हमारे पास आ गया. Now, after that, what to do next? Here, this is the complete paper. Total इस paper में हमारे पास 11 questions थे, but we haven't done the question of vectors. The question of vectors, which is not in the syllabus now. Question number 8. कंप्लीट हुआ हमारा पेपर 11:54 पर. और अगर एक क्वेश्चन और हम इसमें ऐड कर लें तो लेट्स से कंप्लीट हुआ हमारा पेपर 12 o'clock. 1 hour में कंप्लीट हो गया पेपर. And the real time for this paper is 1 hour 45 minutes. We completed 45 minutes before. So if the concepts are clear, then you can easily do the paper in the given time. Okay, students. So this is all about the today's class, inshallah. See you in the next class with the paper of stats. Thank you very much. Allah Hafiz.